Thermal physics. Numerical, a metal rod of length 1 meter expand by 0.02 meter when heated from 20 degree to 120 degree. Calculate its coefficient of linear expansion. The answer is 2 into 10 minus 4 per Kelvin. Given data del L. यहाँ हमें गिवन है कि 1 मीटर इज एक्सपैंड 0.0 m. तो चेंज इन लेंथ इज 0.0 मीटर. Change in length is 0.02 meter and the initial length is 1 meter. L naught. Del T change in temperature 120 Celsius degree Celsius minus 20 degree Celsius is equal to 100 Celsius. कैलकुलेट कर लेंगे T minus T naught. T हमारा फर्स्ट टेम्परेचर 120 and 20 degree. To find the formula for linear expansion, we use del L is equal to alpha L naught and del T. Alpha is equal to del L upon del naught L naught del T. Change in temperature and change in length. Substituting the values, alpha is equal to 0.02 meter upon 100 C degree Celsius into 1 meter is equal to, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 1/4500 and when 0.02 per Kelvin temperature 2 into approximate साइंटिफिक नोटेशन में 10 minus 4 per Kelvin. A container holds a liter of water of 20 degrees Celsius. What it will be the volume at 80 degrees Celsius? Assume water's coefficient of volume of expansion is 2.1 into 10 minus 4 per degree Celsius. So आंसर हमारा आता है 1012.6 क्यूबिक मीटर. सॉल्व करेंगे. फर्स्ट गिवन डाटा लिखेंगे. गिवन डाटा हमारा वी नॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मीटर. टी नॉट टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 80 डिग्री. del T is equal to change in temperature T minus T naught and del V volume is equal to first volume minus V naught. Formula for beta is equal to del V upon del V naught del T. Substituting the values. So हम यहाँ फॉर्मूला another है ये यूज़ करेंगे by using V is equal to V naught into 1 plus beta and del T. Change in the temperature. Given data substitute करेंगे 1 meter V naught and 1 plus 2 into 1 into 10 minus 4 into 60 degree is equal to 1.012 मीटर. मीटर को हम क्यूबिक में करेंगे 10 into 10 into 10 is equal to प्रोडक्ट करेंगे 1012.6 क्यूबिक मीटर इज द आंसर. मेडिकल नंबर 10.3. A steel rod initially measure 2 meter at 20 degrees Celsius if its coefficient of linear expansion is 1.2 into 10 minus 5 degree per degree Celsius. What will be its length at 100 degrees Celsius? Answer 2.02 m. Solution. Given data L naught initial length is equal to 2 m. T naught is equal to temperature is equal to 20 degrees Celsius. Alpha coefficient of linear expansion is equal to 1.2 into 10 minus 5 degrees Celsius. Del L is equal to unknown and the initial or given temperature 100 degrees Celsius. फॉर्मूला हमारा यहाँ सेकंड 2 फार्मूलाज गिवन है. फर्स्ट सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे बाई फार्मूला L इज इक्वल टू L नॉट इंटू प्रोडक्ट विद 1 प्लस अल्फ़ा del T. अल्फ़ा गिवन है. वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग एंड कैलकुलेट. आंसर इज 2.022 मीटर.
Numerical number 4, a steel bridge expands by 5 cm on a hot summer day. If the bridge originally spanned 100 meter, what is the temperature change? Solution और 41.67 डिग्री सेल्सियस गिवन हमारे पास है L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रिज 5 cm को कन्वर्ट करेंगे स्टील ब्रिज एक्सपेंड हमारी है चेंज इन लेंथ 0.05 स्पैंड इज इक्वल टू 100 मीटर क्यू इज इक्वल टू ही टी अननोन है हमें व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज रॉड चेंज हो जाते हैं एंड ब्रिज एक्सपैंड हो जाते हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर देन द ब्रिज ऑफ द लेंथ changes the 100 meter into 5 temperature what was solution L naught alpha is equal to 1/2 into 10 minus 5 formula is equal to del T is equal to del L upon L alpha into L naught del T change in temperature or total temperature then bridge changes the length actual length 0.05 upon 1.2 into 10 minus 5 into 100 is equal to 125 per some terms and calculation is 41.6 Celsius temperature C degree Celsius 41.67 डिग्री सेल्सियस अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.5 हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री to Celsius to 100 degree Celsius given that the specific heat capacity of iron is 450 joule per kg per Kelvin so and the answer is 72 kilojoule solution given data from the mass हमें mass given है फार्मूला हमारे पास आएगा del T m c and the del Q is equal to हीट के लिए और चार्ज के लिए हम एक यूज़ करते हैं टर्म इज डिनोटेड फॉर हीट क्यू इज़ डिनोटेड फॉर हीट क्यू इज़ इक्वल टू एम मास सी हमारी जो है वो हमारा कांस्टेंट है कैपेसिटी ऑफ आयरन एंड डेल टी चेंज इन टेम्परेचर मास इज इक्वल टू 2 kg T0 इज इक्वल टू 20 C 100 C टेम्परेचर गिवन हमारे हैं T 100 T del T is equal to T minus T naught 100 minus 20 is equal to 80 degree del T. The constant of the capacity iron is given 450 joule per kg per Kelvin. Kelvin formula Q is equal to MC del T. 2 into 450 into 100 C 72,000 joule. The calculated value and joule is K. We can write 1000 as kilo. 72 kilojoule Q heat. Numerical number 10.6 how much heat is required to melt 500 gram of ice at 0 degree into water at 0 degree Celsius or and question mark for latent heat of fusion of ice is given 3.36 into 10 5 per kg. Answer is 168 kilojoule. Solution given data mass 500 gram. Mass 500 upon 100 calculation conversion of a gram into kg 0.5 kg. Del T is equal to T minus T naught 0 minus 0 is equal to 0 degree. LF fusion latent fusion heat is equal to given है 3.36 into 10 5 joule per kg. क्वेश्चन Q हमारा हीट है हीट इज डिनोटेड बाय Q
required for this fusion or process. Q is equal to MLF से प्रोडक्ट करेंगे 0.5 इंटू 3.36 इंटू 10 इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे. Q इज इक्वल टू 160 जॉल 168 joule. Calculate 10.7 the heat required to complete vapors 1 kg of water 100 degrees Celsius. Latent heat of the vaporization of water is equal to 2.26 into 10 6 joule per kg. Answer 2.26 mega joule as the answer. To find solution given data, heat of fusion, vaporize. Heat for vaporization, fusion, melting point or heat is equal to required unknown. Q mass is equal to 1 kg. LV हमें given है. Latent vaporization constant 2.26 into 10 6 joule per kg. फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Q is equal to MLV. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. के से कट -2.26 to 10 6 2.26 मेगा जॉल इज द आंसर. चैप्टर 11 के ओनली थ्योरी है, नॉट न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल नंबर वेव. चैप्टर 12 न्यूमेरिकल नंबर 12.1. The wavelength of a wave is 2 meters and its frequency is 5 hertz. What is the speed of the wave? Answer is 10 meter per second. Solution given data lambda is equal to 2m, f is equal to 5 hertz, v is equal to unknown, and using the formula to calculate the wave speed of the wave. V is equal to 2 into 5 is V is equal to 10 meter per second. 12.2 a wave travels at a speed of 300 m per second and has wavelength of 3 meters. Calculate its frequency. Solution. Answer 100 Hz hertz. Solution. The given data v speed of wave is equal to 300 meter per second. Lambda is equal to wavelength is given is equal to 3 मीटर. यहाँ 3 मीटर हमें wavelength given है. फॉर्मूला f फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे. f is equal to unknown. फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी v is equal to lambda f wavelength into frequency is equal to speed of the wave. F is equal to v upon the lambda 300 by 3 or 300 upon 3 is equal to 100 hertz is the answer.